Hi friends, welcome to the expert section. So we are continuing with our series time, speed, distance, and this is a particular topic of the to and from motion. This is the second video on the same. We have already done the basics of the to and fro, right? There's something called as a GPS method. It's a very good and very effective method because ये थोड़े से टेढ़े questions होते हैं, ठीक है? To and from level 2 questions will be doing. Now what is it? अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज यूज करूंगा, इसलिए हम पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं. दैट इज सिमिलरिटी इन द ट्रायंगल्स, राइट? वी रिसेंटली हैव डन इट. सो व्हाट इज द सिमिलरिटी इन द ट्रायंगल? लेट्स से ये अगर ट्रायंगल सिमिलर है, राइट, दिस एक्स शेप इज ऑलवेज सिमिलर बिकॉज ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, राइट? लेट्स से थीटा एंड थीटा, एंड लेट्स से दिस इज अल्फा एंड अल्फा, and also this is beta and beta. ये alternate angles होंगे. So I can say these two triangles are similar. Let's say AOB and DOP. And what is the property of similar triangles? That corresponding sides are proportional. That means DP upon AB will be proportional to, right, DO upon OB and so on so forth, right? So we'll use this thing here. So just keep this in mind. Now let's start with this question. So if you see here, अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है जो ध्यान में रखनी है. यहाँ पे तीन टाइप के जनरली क्वेश्चंस पूछते हैं. इसमें एक there's something called as कभी क्रॉस पूछेगा, राइट, कभी मीट एंड ओवरटेक. So please keep in mind all this thing. Overtake has to be from the back, right? So overtake means same direction. Cross has to be in the opposite direction, right? Meeting can be both. Meeting can be from the same opposite side as well as from the same side, right? So please keep this in mind. छोटे-छोटे words है but useful things, right? So here is the first question. So the 100-meter long एंड स्विमिंग पूल है साउथ एंड एंड नॉर्थ एंड, ठीक है? एंड राम एंड श्याम क्रॉस एट साउथ एंड व्हेन ही हैज swum 400 meters and Shyam has swum 600 meters. Now here just let me quickly draw it. It will take some area of your page, but believe me, it's very effective method. Okay, now एक चीज याद रखना, because what is this meeting वाला ही क्वेश्चन है. इसमें क्या होता है, in the time is always constant, and I know if time is constant, speed is directly proportional to the distance. So यहाँ पे जो ये राम है और श्याम है, इनके डिस्टेंस का रेशियो क्या है? राम has traveled 400 and Shyam has traveled 600. तो ratio of the distance is 2:3. Same will be the ratio of the speed. Okay, तो इसकी speed अगर 2 है तो उसकी speed 3 रहेगी. Just let me mention who. So this is, let's say, they start from the south end. Okay, this is south end and this is north end. Distance given between them is how much? 100 meters. And here is Ram, also here is Shyam. What is the ratio of this speed? As I got Ram की 2 है, right? Shyam की 3 है. Now what we can do here is, basically this is the distance and time graph. Okay, if I plot on the x-axis, if I take a distance, right, if अगर ये distance है, so मेरा y-axis here on the x-axis it is a time, and this on the y-axis it is distance, right? So how much time Ram takes to cover this 100 meters? Ram का time होगा 100 at the speed of 2, so Ram will take 50 seconds, right? And similarly Shyam will take 100 by 3, that is 33.33 seconds. Okay, and what is asking, जब राम के 400 हो जाएंगे, मतलब राम के 400 बेसिकली 4 राउंड्स इसके और शाम के 6 राउंड्स. ओके, सो जस्ट लेट अस ड्रॉ एनी वन ऑफ बोथ ऑफ देम. सो जस्ट लेट अस टेक फर्स्ट राम वाला केस. सो राम
हर 50 seconds में he will travel this 400 meter, right? So let's say this is first 50, okay, then 50 to this is 100, ये 200 हो गया, right? Then 100 से 150 and last this is 200, okay? So this is the 4 rounds or 400 meter of Ram is done. Now let's come to the Sham. Sham is doing 33.33. ऐसे उसको 6 लेने, right? So 33.33 will be somewhere here. I just need to approximate, okay? So if I just connect this 33.33, this is for whom? The Ram. Then it would be what? 66.66. Let's say somewhere here 66.66. And 66.66 plus 33.33 is nothing but the 100. So it would be somewhere here. Then 100 plus 33.33 again here. 133.33 is, this will be 166.66. Okay, just a simple drawing I am drawing, okay? And last 200. So they will be here at the same moment. So ये 6 laps इसके हो गए. Now what is asking? So how many times do they cross? Even if they meet at north or the south end at the same time, that would be considered as a cross. तो ये जो 200 वाला है, this is also a cross. Now just see कितने cross हुए. He was going up, then he came down, and the cross has to be in opposite direction. So this is the cross 1. Similarly, he was going down, then he gone up, and ये ऊपर से नीचे आ रहा है, तो this is cross 2. Then this again, this is cross 3, this is cross 4, right? And ये last वाला भी cross consider होगा by the given definition, that if they arrive at the north or the south and at the same time, it would be considered as a cross, right? So how many total cross there? Actually it is 5. ठीक है, so basically total 5 crosses है, but question में बोला how many times they meet before this point. कितने बार this point, मतलब ये लास्ट वाला जो 200 है ये हमको नहीं कंसिडर करना है. So the answer of this question would be 5 minus 1, 4 crosses. That should be the answer, right? वैसे टेक्निकली 5 क्रॉस हो रहा है, बट क्वेश्चन में उसने पूछा how many times before this point did they cross. So ये 200 से पहले they cross for 4 times. Okay, so I hope this is clear again. Now let's go to the next question. Again, just let me quickly draw it. What it says now? A swimming pool has a length of 50 meters. ठीक है, just let me write it. 50 meters का है. Race है but 300 meters की, simultaneously starting at the speed 3 and 5. ठीक है, so राम भी यहाँ से शुरू हो रहा है. राम is traveling at the speed of 3 and Sham is traveling at the speed of 5. Okay, so what is the time taken? Time taken by Ram will be 50 by 3, basically 16.66, right? And what is the time taken by Sham? It would be, time taken by Sham is 50 by 5, so technically it is nothing but 10. So हर 10 second में he will cover this 50 meters और ये हर 16.66 में. How many times will they meet? ठीक है, meet can be in the same direction or as well as in the opposite direction. meet में cross भी आ जाएगा. अच्छा नहीं, meet while they are traveling in the opposite direction. They has clearly mentioned meet but in the opposite direction, that is, it is nothing but cross he is talking about technically, right? Generally अगर कभी भी meeting बोला तो you need to consider both, but जब यहाँ clearly mention किया है कि meet means typically the crossing line, ठीक है? Before Sham complete the race. Now in how much time Sham will complete the race? Time taken by Sham is, the race is of 300 meters, his speed is 5. So basically he will complete the race is 60 seconds. Okay, now let us draw
50 मीटर का है ना ग्राउंड, सो उसको पहले 50 करने को कितना टाइम लगेगा? लेट्स से राम को पहले, राम विल टेक नथिंग बट 16.66, राइट? तो जस्ट लेट मी, सो ये पहला वाला लेट्स से 16.66, ये सेकेंड वाला 16.66 plus 16.66, basically it's nothing but 2 by 6, 33.33, right? Then ठीक है, so if I just एक नाम दे दो, it is 16.66, basically 1 by 6. नेक्स्ट क्या होगा? 2 by 6. अगर परसेंटेज में दिक्कत है, पॉइंट में, फ्रैक्शन में चलो जाओ, राइट? डबल ऑफ इट, दैट इज 2 by 6. व्हाट इज 2 by 6? 1 by 3, 33.33, right? Then 3 by 6, what is 3 by 6? Is nothing but 50, right? Then 5 by 6 is what? 66.66. इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसके पहले ही रेस शाम ने खत्म कर दिया, राइट? ये ब्लू वाला इज ऑफ राम, ठीक है? नाउ लेट्स टेक द शाम का केस. शाम हर 10 सेकेंड में वहां पे होता है, तो सम व्हाट लाइक दिस, लेट्स से दिस इज 10, राइट? देन सेकेंड पार्ट विल बी 20 समवेयर हियर, ठीक है? जस्ट ट्राई टू ड्रॉ प्रोपोर्शनेट. मेरी थोड़ी सी प्रोपोर्शनेट नहीं भी बनी, फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल 30 के बाद दिस इज हाउ मच? दिस इज 40, this is 50, he will be here, and last is 60 somewhere here. So जो black line represents whom? शाम का. Now let's look at it. Cross. So ये he is also going up, he is coming down. So this is my cross one, right? Then he is going down, then again यहाँ से up, और ये ऊपर से नीचे. So this is cross 2, right? Then ये up, ये down. This is cross 3, and here at this 50 you will not count this as a cross. Last वाले क्वेश्चन में it was given, right? but इस केस में आप एक क्रॉस कंसिडर नहीं करोगे. so technically before he complete the race, ये 60 पे अभी रेस खत्म हो जाएगी. so how many times they have met in the opposite direction? This is not in the opposite direction, this is in the same direction, right? ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है. you can't consider this as a cross unless and until said, right? So answer of this question is nothing but then 3 crosses. ठीक है? So I hope this method is clear. कुछ भी कैसा भी डाउट हो, you can always mention us in a comment section or the Telegram group. Now here it is what 70 kilometers, and just let me draw the quick diagram. What is asking? 32nd टाइम कब मिलेंगे, राइट? सो नाउ स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट ठीक है. इफ यू डोंट वांट टू गो बाय द फ्रैक्शन, जैसे अगर मैं 70/20 कर दूं तो इट विल गो इन द पॉइंट्स, राइट? 3.5. सो अगर आपको फ्रैक्शन में नहीं जाना है तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ रेशियो. आप रेशियो पे चले जाओ, कोई इश्यू नहीं. सो जैसे देयर आर 2 points A and B start from 2 places P and Q, 70 moving towards each other respectively, right? So A starts from P, this is A and this is point P, and this is point Q. B starts from Q. I'll take the ratio of the speed, ठीक है? तो A का रेशियो का स्पीड कितना होगा? 2, और B का होगा 5, okay? And this distance is how much? 70 kilometer. ठीक है? Now if I take this ratio of the speed, how much time they will take? This B will take time as 70/5, nothing but 14, right? He will be after every 14 hour, and this guy will take, A का time होगा 70/2, that is every 35 hours.
सो जस्ट लेट मी ड्रॉ, तो ये हर 35 आवर्स में इतना डिस्टेंस कवर करेगा. सो जस्ट let's say this is 35, the first case, right? Then this is 35, this will be how much? 70, 105, and this will be let's say 140. ठीक है, जरूरत पड़ी तो आगे देखेंगे. सो ये 35 है, ये 70, ये 105, and this is 140. Now what is the second case? 14 hours, right? So he is going from this direction, तो 14. just try to draw proportionate जितना कर सकते हो कोशिश. ठीक है, 14 के बाद 28, 28 plus 14 is 42, somewhere here 42 plus 14 is 56, right? And 56 plus 14 is 70. 70 plus 14 is how much? It is 84, right? Now 84 plus 14 is how much? 98, somewhere here. 98 plus 14 is, just let me write the name. This was how much? This was 14, right? This was 28, this was 42, this was 56, this is 70, 84, right? 80 plus 4 plus 14 is 98. 98 plus 14 is 112, so somewhere here 112. just let me join it. 112 plus 14 is 126. Okay, and last 126 plus 14 is 140. This is 126 and this is 140. Now it's a fresh start again, right? They अब दोनों अपनी अपनी जगह पे आ गई. They are at the opposite end, right? Now what is asking? So basically एक साइकिल हो गया. अब यहाँ पे देखो कितने मीटिंग्स हुए. ठीक है, मीटिंग मीन्स एज आई सेड अपोजिट डायरेक्शन भी चलेगा और सेम डायरेक्शन भी, अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन लाइक इन द लास्ट वन. सो ये वन मीटिंग, राइट? वन, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 8, राइट? सो जस्ट लेट मी सी कहीं पे कोई मिस तो नहीं हो गया. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ओके, अब एक 140 के साइकिल में कितनी मीटिंग्स हुई है? 9 मीटिंग्स हो गए, राइट? सो 9, मुझे क्या चाहिए? 32nd मीटिंग. दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, जस्ट पे अटेंशन केयरफुली. 32 में से 9 के कितने साइकिल निकल जाएंगे? 9. देन दिस वुड बी नथिंग बट 10, राइट? 10, दिस इज नथिंग बट 11 एंड सो ऑन सो फोर्थ. ये कितना हो जाएगा? 18 तक. फिर अगेन 19, 20, 21, तो ये कितना हो जाएगा? 27, राइट? सो 32 में से 9 के 3 मल्टीपल 27 निकल गए. तो बेसिकली आई एम लुकिंग फॉर द 5th मीटिंग जहां पे होगा, राइट? जो ओरिजिनल 5th मीटिंग है. सो 5th मीटिंग कहां पे हो रहा है? इफ यू लुक इट केयरफुली, 5th मीटिंग इज हैपनिंग एट P only, right? P point पे ये. So this is the 5th meeting and he is asking at what distance from P. So the answer of this question is 0, because जो मेरा 32nd meeting हो रहा है वो exactly P पे ही हो रहा है, right? So this was a very beautiful question. So answer is 0 kilometer, because meeting is taking place at P only. Okay, so I hope this question is clear. Now let's move to the next question. Okay, now let's take this set. दो question का set है. What it says, Anna and Bartley start from two places X and Y 80 km apart. So basically this distance is given as 80. Now they travel towards each other at 30 and 40. तो X की जो speed है, X की speed is 30 and Y की speed is 50. Now in this, do you remember, right? हम यहाँ पे time लेते हैं, right? और ये distance. Now I know distance is constant. ये भी 80 चलेगा, ये भी 80 चलेगा. अब there are two ways. एक तो मैं टाइम इसका जाऊंगा तो फ्रैक्शन में जाएगा. 80/30 इट विल गो इन द पॉइंट्स, राइट? एंड सिमिलरली 80/50. सो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक द रेशियो ऑफ दिस. दिस डिस्टेंस इज कांस्टेंट. जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो क्या होता है? रेशियो ऑफ स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द टाइम, राइट? सो अगर उनका स्पीड का रेशियो है 3:5,
सो टाइम का रेशियो होगा 5:3. आई होप दिस इज क्लियर. सो x को लगेगा 5 घंटे और y को लगेगा 3 घंटे. ठीक है. सो आई जस्ट मेंशन इट देयर. दिस x से जो निकला है अन्ना के लिए 5. आई होप दिस इज क्लियर. व्हाट इज 5? 5 इज द टाइम, 5 hours टू कंप्लीट दिस. एंड सिमिलरली मैंने जो y पे लिया है बाटली, he will take 3. ठीक है. दिस इज द इनवर्स ऑफ देयर स्पीड. ओके. नाउ जस्ट लेट मी ड्रॉ इट. जैसे अन्ना हर 5 घंटे में आएगा, राइट? तो इधर कुछ लेट्स से 5, लेट्स से दिस इज 10, 15, 20, let's say 25. Now similarly, if I look at for the second guy, that is Bartley, will be, just let me write the names first. ये 5 था, ठीक है. ये होगा 10, ये 15, ये 20 और ये 25. Now just look at this second guy. वो हर 3 में, so basically somewhere here 3, then second 6 somewhere here, 6 के बाद कितना 9 somewhere here, 9 के बाद 12 थोड़ा कुछ यहाँ पे और 15. ठीक है. तो 15 पे रुक जा, अपोजिट आ गए, मतलब वो जहाँ पे थे वैसे आ गए, राइट? सो इफ आई जस्ट राइट इट, दिस इज हाउ मच, दिस इज 3, this is 6, this is 9, this is 12 and this is 15. Now they're again opposite in the same manner. Now what is asking in the first question? Distance from x, मतलब ये जहां से अन्ना खड़ा है वहां से 22nd time. Okay. Now this is the first meeting, this is a second meeting, this is a third meeting, fourth, right? And this is 5. So basically 5 के मीटिंग्स हो रहे हैं, राइट? तो 5 के कितने निकल जाएंगे 22 में से? 22 माइनस 5 के 20 मीटिंग्स, राइट? So basically second meeting from the start should be your answer, that is this point. तो यहाँ पे meeting होगा 22nd. So this is the point I was looking for. Now here I'll use the similarity का concept. I know, let's say let us give the name to the, if I say this point as let's say P, let's say this point as O, ठीक है, यहाँ पे मीटिंग पॉइंट, दिस पॉइंट एज Q, दिस इज R, and let's say this is S. So I know this triangle, that is POQ should be similar to ROS, right? अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर. आई होप यू नो दैट जब भी ट्राइंगल सिमिलर होते तो क्या होता है, इफ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर लाइक दिस, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आर प्रोपोर्शनल. सो यहाँ पे व्हाट इज दिस साइड 5 and 6, so this difference is 1, and यहाँ पे 3 to 10, this difference is 7. So every side will be in the ratio 1:7, right? So ये जो distance होगा बीच वाला, as he is asking from x, this will also be 1:7. So अगर मैं 80 को 1:7 के पार्ट में बांट दूं, ठीक है, ये 7k होगा and this part is 1k, right? And I know the total distance is 80. So I can equate directly 8k should be equal to 80. तो मेरा k आ जाएगा 10. And what is he asking from the x? That means ये 7k पूछ रहा है वो, right? So 7k, 70 should be answer of the first question. Okay. I hope this point is clear. So answer of this particular question is 70. Now let's look at the second question. ठीक है. So I'll just erase some part of it. जैसे ये this is done. Even I'll erase this part. Let us let us draw fresh only. This is x, this is y. x से निकला था अन्ना का टाइम हमने कितना लिया इनवर्स, उसकी अगर 3 स्पीड थी तो उसका टाइम हमने लिया था 5. सिमिलरली बाटली का टाइम था 3. दिस वाज 80 किलोमीटर द डिस्टेंस. लेट मी जस्ट क्विकली ड्रॉ द, अन्ना का होगा 5, दिस इज 10, दिस इज
15, ठीक है. आई थिंक इतने में काम हो जाएगा. 20. सेकेंड, फॉर द Bartley is what? 3. Just let me quickly write it. So this is how much? 5. This is 10. This is 15 and this is 20. So Bartley का this would be what? 3 यहाँ पे कुछ आएगा. 3 के बाद this is 6. 6 के बाद this is 9. 9 के बाद something 12. 12 के बाद 15. So ये Bartley का चार्ट हो गया. This is 3, this is 6, this is 9, 12 and this part is 15. Now what is asking? Find the distance between 21st meeting along the track XY, ठीक है, उसी ऑर्डर में, between 24th and 21st meeting. चलो दोनों ट्रैक करते हैं. So कितने मीटिंग्स हुई है? 1, 2, 3, 4 and 5. ठीक है. So 5 का साइकिल जाएगा. So 5 then 10 then 15 then so 21st में से मेरे 5 के कितने मल्टीपल गए? 20. So basically is talking about first meeting, है ना, एक ही बचता. तो this is the meeting he is looking for. तो ये वाला रिक्वायर्ड है मेरा 21st, ठीक है, and second is 24. तो basically 20 गए. तो चौथी मीटिंग is talking about 1, 2, 3 and 4. This is a 24th meeting is talking about. और इन दोनों के बीच का what is asking is the distance, right? So फिर से वही सिमिलरिटी. तो ये 0 था, 0 से 3, ये ट्राइंगल होगा, इसकी लेंथ होगी 3 एंड ये होगा 0 से 5, दैट इज 5. सो 80 को बांट देना है 3:5 में. सो बेसिकली दिस गैप विल बी हाउ मच? 3 पार्ट आउट ऑफ 8 पार्ट. तो ये वाला हो जाएगा मेरा 30. आई होप दिस इज क्लियर. दिस इज 3K एंड 5K. So 8K 80, तो ये होगा 30. Now this part 9 to 10, ये सिमिलर ट्राइंगल कहाँ से होगा? ये 9, 10. If I want to write the name, this is P, this is O, this is Q, and this will be making with, just draw the straight line, यहाँ पे R 5 और S ये 12S, right? So if I just want to show you the similar triangles, it would be this ग्रीन वाला जो हाईलाइट मैंने किया, ठीक है. सो व्हाट इज दिस डिस्टेंस? दिस इज नथिंग बट 1 पार्ट एंड दिस इज 5 to 12, दैट इज 7 पार्ट. सो 1:7 में बांट दिया. तो दिस गैप विल बी व्हाट? 1 पार्ट, दैट इज 10, राइट. सो ये डिस्टेंस 30 है और ये डिस्टेंस 10 है. तो दोनों के बीच का गैप कितना हुआ? दोनों के बीच का जो गैप ही इज आस्किंग इज नथिंग बट 30 minus 10. 20 has to be the answer, right? So I hope this is clear. Simple सा चीज है, just practice a bit, you will get a hang of it. Okay, let's take another question. ठीक है, Ram and Sham start simultaneously 210. Just let me know. Keep in mind यहाँ पे टाइम पूछा है, right? And that too for the third time. चलो एक बार निकालते quickly. The distance between them is 210 meter. ठीक है, there are 2 points. So this is, let's say A से कौन निकल रहा है? राम. राम का जो स्पीड है that is 2. So अगर राम की स्पीड 2 है, what is the time taken by Ram? 210 by 2, basically 105, right? He will take 105 second to go across the other end. Similarly B से कौन आ रहा है? श्याम. शाम की स्पीड क्या है? 5. अगर शाम की स्पीड 5 है, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय शाम टू कंप्लीट दिस 210? इज नथिंग बट 210 by 5, 42 seconds. So after every 42 seconds he will be at the other end. So just let's first start with the Ram. So Ram का अगर 105 something like this, 105, this is 210, this is 315 and let's say लास्ट भी डाल देते हैं यहाँ पे 420. ठीक है. Now if we look at for the Sham ka every 42. So just let me first write it. This is 105, this is 210, this is 315 and this is 420. ठीक है. Now if I look at the Sham का चीज, Sham 42 seconds, right? So just if I draw something 42 plus 42 is 84, 84 plus 42 is 126,
126 plus 42 is 168. 168 plus 42 is 210. ठीक है, तो समवेयर हियर 3 ही थर्ड ही मीटिंग चाहिए, तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट, राइट? This is 42, this is 84, this is 126, this is 168 and 200. Now if I look at what is asking the third time, so ये basically first meeting है, ठीक है, ये वाला second meeting है और ये वाला third meeting है. So this is talking about. So again similar triangles, if I say P, this is Q, this is O, let's say this A point is R and let's say this is S. So if I want to look at which is the my similar triangle, ये होगा मेरा similar triangle, ठीक है, POQ और ROS. Now what is the corresponding side? 84 to 105, this is how much? 21 and 0 से लेके 126, so this much gap is 126. So corresponding ratio is 21 by 126, basically 1 by 6 का ratio है. So मुझे 1/6 में बांट देना है पूरा. 1/6 is how much? मतलब बेसिकली 1 पार्ट हुआ है, 6 पार्ट हुआ, तो बेसिकली दिस इज 6K and this is 1K. So this 1K is nothing but 30, right? Because 7K is equal to 210. So my 1K will be 30. ठीक है, so यहाँ तक थर्ड टाइम. सो इफ आई लुक एट द B's रेफरेंस, ठीक है, मुझे टाइम निकालना था. सो जो B से आया था शाम, 84 seconds में ही इज हियर. How much more distance he needs to cover? 1K. And what is 1K? 1K is nothing but the 30 meter, and this 84 wala is my Sham. What is the speed of Sham? 5 meter per second. So Sham will take 30 by 5, another 6 seconds to cover this up and come here. So right, so how much total time it will be for the meeting of the third time? It was nothing but 84 plus 6, 90 seconds should be answer of this particular question. Okay, so I hope this is clear. Just keep in mind this. Okay, so again a recent mock question, similar sort of here, right? What is asking is, my intention is to give you the ample practice, just कि जब भी ऐसा कुछ to and fro वाला क्वेश्चन है, don't think of a theory, just थोड़ा सा डायग्राम बना लो, you'll surely get some clue out of it, right? So Geeta and Babita start from the opposite end, 150, तो ये 150 है. ठीक है, जो A से शुरू होती है वो गीता है और जो B से शुरू होती है वो बबीता है. ठीक है, सो द स्पीड ऑफ गीता इज 30. तो अगर इसकी स्पीड 30 है, व्हाट द टाइम टेकन बाय गीता विल बी? टाइम टेकन बाय गीता विल बी 150 by 30. ये डिवाइड होता है तो नो नीड टू टेक दिस इज अबाउट 5 hours. सिमिलरली बबीता की स्पीड है 50, सो व्हाट द टाइम टेकन बाय बबीता इज 150 by 50, 3 hours. ठीक है, तो ये हर 3 घंटे में और ये हर 5 घंटे में. ठीक है, सो लेट्स से इफ आई स्टार्ट विद गीता, ये गीता का ये 5, ये 10, 15, 20, 25. ठीक है, एक और ले लेते 30. नाउ just let me mention it. So it is what, how much it is? 5, this is 10, this is 15, this is 20, this is 25, and let's say this is 30. Now let's take up the Babita as well. Babita का कितना है? हर 3 घंटे में, right? So ये something 3 के बाद कुछ 6 यहाँ पे आएगा, 6 के बाद somewhere 9 के बाद कुछ 12 के बाद 15, राइट? ठीक है, तो आई थिंक यहां तक मिल जाएगा हमको, बिकॉज पहला ही ओवरटेक ढूंढना है. जस्ट लेट अस ट्राई. ठीक है, ये 50 यहीं पे है, सो जस्ट राइट इट. ये 3, ये 6, ये 9, ये 12 एंड ये 15. व्हाट आई नीड इज द
ओवरटेक, सो ओवरटेक हैज टू बी फ्रॉम इन द सेम डायरेक्शन, ओवरटेक हमेशा ऐसे दिखेगा, राइट? सो इज इट ओवरटेक? नहीं, ये ऊपर से आ रहा है, ये नीचे से आ रहा है, दिस इज नॉट ओवरटेक, राइट? इज दिस ओवरटेक? ही इज गोइंग दिस वे एंड दिस गाइस, तो ये भी ओवरटेक नहीं है. दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इज इट ओवरटेक? यस, ये भी नीचे आ रहा है, ये भी नीचे आ रहा है. सो दिस इज द पॉइंट आई वाज लुकिंग फॉर. सो ये मुझे चाहिए, दिस इज ओवरटेक. ठीक है, अगेन आई कैन टेक अ सिमिलरिटी वाला फंडा. ठीक है, सो हाउ मच इज दिस डिस्टेंस? अगर मैं पहले तो ट्राइंगल देख ले, कौन सा ट्राइंगल सिमिलर होगा, ये 5, 6 और 9, 10 वाला. सो बेसिकली अगर आप देखोगे, सो डिस्टेंस इज हाउ मच, ये 5, 6 ये भी 1 है और 9, 10 ये भी 1 है. 1:1 बेसिकली मीन्स हाफ में होगा, तो एग्जैक्टली हाफ वे डाउन. सो 150 का हाफ इज नथिंग बट 75, राइट? आई नीड टू ओवरटेक बाय बबीता. बबीता इज द, यहां से, तो बबीता ऑलरेडी यहाँ पे 5 बजे है, राइट? 5 घंटे ये, और मिडल वे दे विल, शी विल ओवरटेक. सो बबीता का क्या होगा, 75 बाय द स्पीड ऑफ बबीता. व्हाट इज द स्पीड ऑफ बबीता? इज नथिंग बट 50. इफ यू कैलकुलेट दिस 50 इज हाउ मच? This is 1.5, right? 50 and yeah, 1.5 hours. So if I talk about Babita, so Babita is here at 6 hours, right? तो 6 घंटे के बाद 1.5 घंटा और, right? So 6 घंटे के बाद 1.5 घंटा और means Babita will overtake Geeta for the first time after 6 plus 1.5 times more, 1.5 hours more, 7.5 hours. So after 7.5 hours, Babita will overtake Geeta for the first time. ठीक है, so I hope this is clear. I tried to take as much varieties as possible. ठीक है, please practice it. कुछ भी इसमें doubt है, you can always approach us. Thank you.